क्या हाल है भाई लोगों। मैं हूं आपका यार, अपना नाम। और आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा जो बचपन में करते थे। याद है वो दिन जब मम्मी पापा से पैसे मांगते थे खिलौने के लिए और वो कहते थे खुद बनाओ। तो आज हम वही करने वाले हैं। घर पर बनाएंगे मजेदार DIY क्राफ्ट्स। और हाँ, ये मत सोचना कि इसके लिए आपको दुकान से कुछ खास लाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, घर में जो कबाड़ पड़ा है ना, उसी से कमाल करेंगे। पुराने डिब्बे, बोतलें, कागज सब काम आएगा। तो तैयार हो जाओ अपने अंदर के कलाकार को जगाने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ऐसे ऐसे क्राफ्ट्स जिन्हें देखकर लोग कहेंगे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऐसा क्राफ्ट जो हर बच्चे को पसंद होता है। अरे हाँ, आपने सही पहचाना, एक रोबोट, और वो भी पेपर कप से। अब आप सोच रहे होंगे पेपर कप से रोबोट, ये कैसे होगा। अरे भाई टेंशन नॉट, बस मेरे साथ फॉलो करो और देखो कैसे एक सिंपल सा पेपर कप एक जानदार रोबोट में बदल जाता है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक पेपर कप तो चाहिए ही चाहिए, वो भी खाली वाला। अब उसमें चाय कॉफी मत भर लेना। साथ में चाहिए होगा रंगीन कागज, गोंद, मार्कर, स्केच पेन और 2 बटन। अब सबसे पहले पेपर कप को उल्टा रख दो, यही हमारे रोबोट का शरीर बनेगा। अब रंगीन कागज से हाथ पैर काटो और गोंद से चिपका दो। ध्यान रहे हाथ पैर एकदम सिमेट्रिकल होने चाहिए, नहीं तो हमारा रोबोट बेचारा लंगड़ा के चलेगा। अब बारी है चेहरे की। मार्कर से रोबोट की आंखें, नाक, मुंह बना दो। और हाँ, एक्सप्रेशन भी देना मत भूलना। गुस्सैल रोबोट चाहिए या फिर हंसमुख, अपनी मर्जी से बनाओ। आंखों के लिए 2 बटन चिपका दो। अगर बटन नहीं है तो कोई बात नहीं, बोतल के ढक्कन से भी काम चल जाएगा। और बस हो गया तैयार आपका पेपर कप रोबोट। देखो कितना आसान था। अब इसे अपने स्टडी टेबल पर रख दो या फिर दोस्तों को दिखाओ। अब बनाते हैं कुछ ऐसा जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और घर में भी शांति का एहसास दिलाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक मिनी वाटरफॉल की, और वो भी एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल से। इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बड़ी सी प्लास्टिक की बोतल, नीला रंग या फिर नीली कागज की पट्टियां, गोंद, कैंची, और अगर आपके पास छोटी LED लाइट्स हैं तो वो भी ले लो। सबसे पहले बोतल को आधा काट लो। अब ये काम थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मम्मी पापा की हेल्प ले लेना, नहीं तो हाथ कट जाएगा। अब बोतल के ऊपरी हिस्से को थोड़ा तिरछा करके नीचे की ओर मोड़ो। ऐसा करने से पानी गिरने का लुक आएगा। अब इस पर नीली कागज की पट्टियां चिपका दो ताकि ये असली झरने जैसा लगे। अगर आपके पास नीला रंग है तो उससे भी पेंट कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो इसमें LED लाइट्स भी लगा सकते हो, इससे ये और भी सुंदर लगेगा, खासकर रात के समय। और बस आपका मिनी वाटरफॉल तैयार है। इसे अपने बेडरूम में रखो और देखो कैसे ये आपके कमरे को एक शांत और सुंदर जगह में बदल देता है। चैप्टर 3। अब बारी है कुछ खाने पीने की। अरे मतलब खाने वाला क्राफ्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन खाने से बनाएंगे जरूर। जी हां, अब हम बनाने जा रहे हैं एक मजेदार पॉपकॉर्न मैन। इसके लिए आपको चाहिए होगा सफेद और रंगीन कागज। पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं, चिपकाने के लिए। गोंद, स्केच पेन और एक प्लास्टिक का चम्मच। सबसे पहले सफेद कागज पर एक मजेदार कैरेक्टर का आउटलाइन बना लो। ये कोई भी हो सकता है, एक लड़का, लड़की, जानवर या फिर कोई कार्टून कैरेक्टर। अब गोंद लगाओ और उसमें पॉपकॉर्न चिपका दो। ध्यान रहे पॉपकॉर्न ज्यादा मत चिपकाना, नहीं तो हमारा कैरेक्टर मोटा हो जाएगा। अब स्केच पेन से उसे एक्सप्रेशंस दो। आंखें बनाओ, नाक बनाओ, मुंह बनाओ, और हाँ, बाल बनाने के लिए आप रंगीन कागज का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक के चम्मच से कैरेक्टर का चेहरा बनाओ और बस आपका पॉपकॉर्न मैन तैयार है। देखो कितना मजेदार लग रहा है। इसे आप अपने फ्रिज पर चिपका सकते हो या फिर दीवार पर भी लगा सकते हो। चैप्टर 4। अब आखिर में बनाते हैं कुछ ऐसा जिससे हम म्यूजिक बना सकें। जी हां, अब हम बनाने जा रहे हैं अपना खुद का गिटार, और वो भी एक पुराने जूते के डिब्बे से। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक पुराना जूते का डिब्बा, रबर बैंड, रंग और ब्रश, और एक लकड़ी की छड़ी। सबसे पहले जूते के डिब्बे के ऊपर एक बड़ा सा छेद बना लो। अब उस छेद के ऊपर 4 से 5 रबर बैंड खींचकर लगा दो। ये हमारे गिटार के तार बनेंगे। अब लकड़ी की छड़ी को जोड़कर इसे गिटार जैसा शेप दो। आप चाहो तो इसे और भी मजबूत बनाने के लिए गोंद या फिर टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी है डेकोरेशन की। गिटार को अपने पसंद के रंग से रंग दो। आप चाहो तो इस पर स्टिकर्स भी लगा सकते हो या फिर ग्लिटर भी चिपका सकते हो। और बस आपका रबर बैंड गिटार तैयार है। अब इसे बजाओ और अपने घर वालों को सुनाओ अपनी म्यूजिकल प्रतिभा। म्यूजिकल आउटरो। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या बनाया? पेपर कप रोबोट, मिनी वाटरफॉल, पॉपकॉर्न मैन और रबर बैंड गिटार। बताओ कितना मजा आया?
मुझे उम्मीद है कि आपको ये DIY क्राफ्ट्स बहुत पसंद आए होंगे। अब आप भी इन्हें घर पर ट्राई कर सकते हो और अपने दोस्तों और फैमिली को इम्प्रेस कर सकते हो। DIY आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, मजेदार और रचनात्मक साहसिक कार्य। Hey there, creative geniuses! Welcome back to my channel. Today we're going on a super duper fun adventure. It's time for DIY arts and crafts. We're going to be using stuff we find around the house to make the coolest things ever. Are you ready to cut, glue, paint, and create with me? I bet you're thinking, what are we going to make today? Well, get ready to be amazed because we're making Explorer binoculars, a magical rainbow jar, sock puppet friends, a DIY kaleidoscope, and even balloon stress balls. Oh, and my favorite, paper plate animal masks. Roar! Can you guess what animal I'm going to make? Okay, explorers, our first craft is super cool. We're making our very own binoculars, just like real explorers use. First, we need 2 cardboard tubes, like the ones from toilet paper rolls. Do you have yours? Now, we need to decorate them. We can use markers, crayons, or even paint. I'm going to color mine green and brown like they're camouflaged in the jungle. Don't forget to let your grown-up help you with the scissors. Safety first. Wow, your binoculars look amazing. Now, we need something to hold them together. Let's use some string. Cut a piece of string long enough to go around your neck. Then, glue one end of the string to each of the cardboard tubes. Make sure the glue is dry before you wear them. Now that we've made our awesome binoculars, it's time to move on to our next craft. Are you ready for some colorful magic? Let's make a rainbow in a jar. Get ready to be amazed because this next craft is like magic. We're going to make a rainbow in a jar. It's so colorful and sparkly you'll want to keep it forever. First, we need a jar. Ask your grown-up if you can use an empty jar from the recycling bin, like a pickle jar or a jam jar. Make sure it's clean and dry. Now, for the rainbow part, we're going to use different colors of water to make our rainbow. You can use food coloring or even liquid watercolors. Let's start with red. Add a few drops of red food coloring to a small bowl of water. Next, carefully pour the red water into the jar. Wow, look at that vibrant red color. Now let's make orange. Add a few drops of yellow food coloring to the red water and mix it together. Pour the orange water into the jar, on top of the red water. Keep going with the rest of the rainbow colors, yellow, green, blue, indigo, and violet. Remember to mix the colors and add them to the jar one by one. This craft is so easy and fun, and it looks so cool. You can keep your rainbow jar in your room as a decoration, or even give it to a friend as a special gift. Remember, if you don't have all the same colors, that's okay. You can use the colors you have and create your own unique rainbow. Now that we've made our magical rainbow jar, are you ready for our next crafting adventure? Let's make some cuddly sock puppet friends. Have you ever lost a sock in the laundry? Don't worry, it happens to everyone. But guess what? We can turn that lonely sock into a super fun sock puppet. First, we need to find a sock that's missing its match. Any color or pattern will do. I'm using a stripy sock today. Now let's give our sock puppet some eyes. You can use googly eyes, buttons, or even draw eyes with a marker. Glue the eyes onto the toe part of the sock. Next, let's give our puppet a mouth. Cut a small piece of red felt or construction paper into a smile or a silly tongue. Glue the mouth below the eyes. Put your hand inside the sock and make your puppet talk. You can put on a puppet show for your family and friends. Now that we've made some silly sock puppet friends, are you ready for our next colorful creation? Let's make a DIY kaleidoscope. Get ready to be mesmerized because we're making our very own DIY kaleidoscope. It's like having a pocket full of rainbows and sparkly surprises. First, we need a cardboard tube, just like the ones we use for our binoculars. You can also use a paper towel roll if you have one handy. Now let's make the magic happen. Cut a piece of clear plastic wrap a little bit bigger than the end of the cardboard tube. Secure the plastic wrap to one end of the tube using a rubber band. Make sure it's nice and tight. Next, let's create the colorful part. Cut out small shapes from colorful cellophane paper. You can use different colors, shapes, and sizes. Triangles, squares, circles. Get creative. Sprinkle the cellophane shapes onto the plastic wrap at the end of the tube. This is where the magic comes in. These colorful pieces will create the mesmerizing patterns in our kaleidoscope. Now cover the other end of the cardboard tube with a piece of black construction paper. Use a pencil to poke a small hole in the center of the black paper. Look through the peephole and slowly rotate the cardboard tube. You can experiment with different colors and shapes of cellophane to create different kaleidoscope effects. Now that we've created our own dazzling kaleidoscope, it's time to make something to help us relax. Let's make some squishy balloon stress balls. Feeling a little wiggly? Need to squeeze something? Let's make some super satisfying balloon stress balls. They're squishy, fun, and easy to make. First, we need a balloon. Any color will do. I'm using a bright yellow balloon today. Now let's fill our balloon with something squishy. We can use rice, flour, or even Play-Doh.
I'm going to use flour for my stress ball. Carefully pour the flour into the balloon. You can use a funnel to make it easier. Fill the balloon about halfway full. Now, this part is important. Squeeze out all the air from the balloon before you tie it off. You want your stress ball to be nice and compact. Tie the balloon in a knot, making sure it's super secure. You don't want your flour to spill out. Now the fun part. Squeeze your stress ball. It's so satisfying. You can squish it, squeeze it, and roll it between your hands. Now that we've made some awesome stress balls, it's time for our final craft of the day. Let's transform into our favorite animals with paper plate animal masks. Get ready to roar, chirp, and trumpet because we're making paper plate animal masks. What's your favorite animal? A lion? A monkey? A giraffe? We can make them all. First, we need a paper plate. You can use a regular white paper plate or a colorful one. I'm using a bright red plate for my mask. Now let's decide what animal we want to be. I'm going to make a lion mask because lions are brave and strong. Roar. Cut out 2 large circles from construction paper for the lion's eyes. You can use different colors for the eyes, like yellow or green. Glue the eyes onto the paper plate. Next, cut out a large triangle from orange construction paper for the lion's nose. Glue the nose below the eyes. Now let's give our lion some fierce teeth. Cut out small triangles from white construction paper and glue them along the bottom of the paper plate. For the lion's mane, cut strips of yellow or brown construction paper and glue them around the edges of the paper plate. Wow, your animal mask looks amazing. Put it on and let out your wildest animal sound. You're ready to put on a jungle adventure play. I had so much fun crafting with you today. You are all creative geniuses. Wow, we made so many amazing crafts today. We made explorer binoculars, a magical rainbow jar, sock puppet friends, a DIY kaleidoscope, balloon stress balls, and even paper plate animal masks. Which craft was your favorite? If you had fun crafting with me today, give this video a big thumbs up, subscribe for more awesome ideas, and share your crafts with your friends. Remember, creativity is everywhere. Keep crafting, keep creating, and I'll see you next time. Bye!